Good morning, everyone. Class 11, subject biology, chapter transport in plants. We have read in previous class diffusion and facilitated diffusion. Let's begin the topic active transport. Transport in plants, active transport. Active transport is carried out by membrane proteins. Active transport uses energy to pump molecules against the concentration gradient. It is carried out by membranes protein. Active transport, it is utilized to ATP pump. In active transport, movable carrier proteins are called pumps. Low concentration to high concentrations. In the active transport, that molecules move against the concentration gradients, उसके विरुद्ध उसके against में, and define as the movements of ion molecules directions opposite to the prevailing electrochemical gradient. The energy required is the process come from ATP produced by oxidative phosphorylations. Active transport is very important as it rapid selective exhausts intake many nutrients by the cell. Help maintaining defined ionic concentration, osmotic pressures with the living system. फिगर में देखिए डाउन हिल high concentration to low concentration to high concentration active transport diffusion. डाउन टू हिल यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है. एंड इधर अप हिल यानी इट इज़ सम पार्टिकल्स दैट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या केस, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अप हिल. तो इसे कहते हैं अप हिल. स्पेसिफिक बाइंड्स ट्रांसपोर्ट सम स्पेसिफिक सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एंड active transport component releasing the transport the carrier utilized move again to pick up and other transport. Metabolic changes along with the chemical component plasma membrane. Transport rate reaches maximum when all protein transport. Saturated transport reaches maximum when all protein transport are being used are saturated like enzymes, and carrier protein is very specific across the membrane. Show in this the figure carrier and nature molecule substance outsides of the cells and conformations changes membrane lipids by layer and ATP एनर्जी के फॉर्म में है. एनर्जी फ्रॉम ATP एंड इनसाइड्स ऑफ सेल. ये है रिप्रेजेंट द रूल्स ऑफ कैरियर इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. And next, uniport, symport and airport. Uniport carrier protein है. Uniport means when a molecules move across a membrane independent of other molecule, the process is called uniport. ये क्या है, एक ही डायरेक्शंस में one direction. And uniport when ion and molecules cross membrane independent other molecules when two ions molecule cross the same time in the same direction. एक ही समय में एक ही डायरेक्शंस में ये
ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन अब एंटीपोड मतलब ऑपोजिट। एंटीपोड बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एंटीपोड। सिमपोड बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शंस में मेम्ब्रेन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेम डायरेक्शन है तो सिमपोड कहते हैं, सेम डायरेक्शन। ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड यूनिपोड, सिमपोड या कंट्रास्ट पोड भी से कहते हैं, एंड एंटीपोड। डिफ्यूजन प्रेशर directly proportional to the concentrations of diffusing particles. Higher concentration particles, greater the diffusion pressure. Diffusion pressures to pure solvent greater than the same solvent in a solutions. Comparison different transport mechanism highly selective होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड होता है एंड रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी, यस। अपहिल ट्रांसपोर्ट, यस। ये एक्टिव टुडे आज हम लोग ने पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। थैंक यू क्लास।